Um, Good evening, everyone. Myself, Anjali Prasad. So, today we are going to start with the week 7 assignment problem solving session. We will start in few minutes. Let's wait for others to join. Um, so, let's start with the week 7 assignment discussion session. So, today we are going to discuss some problems related to connected spaces. So, let's go through some basics that you might have gone through in the lecture videos. So, first of all, let's discuss what is connected spaces. So, first, connected subsets. So, if you have x comma tau connected a topological space and E subset of X, then we say E is connected if E comma tau E is connected. Okay. And E is disconnected if E comma tau is disconnected. Okay. Now what is there you haven't seen one theorem on disconnected subsets. So let X tau be a topological space, and if E is subset of X, then E is disconnected if and only if there exist tau open subsets A and B such that E is subset of A union B. Let X tau be a topological space and E subset of X, then E is disconnected if and only if there exist tau open sets A and B such that you can write E subset of A union B, and E intersection A will be non-empty, E intersection B will be non-empty, and E intersection A intersection B is empty. Okay. So then we will say that a subset E of X is disconnected. Okay. If it satisfies all these properties. Now, next theorem was that let E be a connected subset of a disconnected topological space having separation A and B, then E is subset of A or it is subset of B. Fine. Next, there was a theorem related to that let E be a connected subset of a topological space X tau, then F subset of X such that E subset of F subset of E closure
then F will be said to be connected. Okay, that is F. If F lies in between E and its closure, then we can say that F is also connected. Okay, where E is connected. Next theorem was that let X tau be a topological space and consider subset EI, set EI such that I belongs to index set, be a collection of connected subset of X such that intersection of all EI is non-empty. Okay, then if you will take its union, arbitrary union, then it will be connected. Fine. Next, there was a theorem regarding to that. Let f from x tau to y tau dash be a continuous function and x tau be connected. Then f of x is a connected subset of y. Okay. Then there were some results like continuous image of connected topological spaces, again connected. Fine. Next, connectedness is a topological property. Then question space of a connected topological space is connected. Okay. Next, there was a result for product for connectedness that let x1 tau1 and x2 tau2 be connected topological spaces. Then the product space x1 cross x2 comma tau is connected. Next, what are components? That is maximal connected set. So if you have x tau, a topological space, so we can define a relation R on X such that it can be defined in this way. So you have a equivalence relation and you have a class X such that all y belongs to X, which is X related to Y. How we will define that? If X and Y belongs to C. Okay, that is a connected set. So this will all form components. That is, a maximal connected set will be forming the component. Okay. Next, so we denoted the component um, by a component for containing a element x. So it is denoted by C of x. Okay. Where you can say that let x tau be a topological space and R be an equivalence relation on X such that X related to Y. If XY belongs to C for connected subset C, then the equivalence class X is called component in X of X where X belongs to X. Okay. Next, let X tau be a topological space and X belongs to X. Then the component C of X is what? Union of all connected sets containing X. Okay. So there were other results also related to components. That the component C of X is a connected subset of X, that is a maximal connected subset of X, and A is connected than A subset of X for some X belongs to X. Okay. Also, the component C of X is a closed set. Now, what is totally disconnected set? Spaces. So, a topological space X tau is totally disconnected if the component of that particular element X belongs to X is only singleton X for all X belongs to X. Then we will say that the topological space is totally disconnected. Fine. Now, components under homeomorphism. How it is defined that? So, let F from X tau to Y tau dash be a homeomorphism. Then the image of a component in X is a component in Y. Okay. So, if F is the homeomorphism, then image of component in X will map to component in Y. Okay. Now, connectedness of R. So, the topological space R, there were some examples on connectedness. Then, existence of continuous functions also can be seen in terms of connectedness. Then, you've seen results like any continuous function f from R to Q must be a constant map. Okay, and this generalizes that Q will be a totally disconnected space. Fine. Um, then you saw how to check that a particular space is not homeomorphic, and there were also some examples related to homeomorphism related to. So these were all about the lectures that we have gone through. I hope it is clear to everyone. So shall we proceed with the questions? Is it clear? Shall we move towards the question answers?
So the first question is, so try this first question, that is, consider the following topology on X set given by A, B, C, D, E. The topology is given by set X, empty set, then singleton set A, then set containing C, comma D, and set containing A, C, D, and then set containing B, C, D, E. Okay, so then the components of X are, so you have to determine what are the components of X. Okay, so is it option A, that is only whole set X, or B, that is only singleton set A, or is it C, that is singleton set A and set B, C, D, E, or is it D, that is none of the above? So find out what are the components of X and tell me the answer. So you are saying option C, other. What is the answer you are getting? Okay, so you are getting answer as option C. Okay, how it is? Can you just justify why option C? Can you justify why you are getting as option C? That you are saying that singleton A and set B, C, D, E should be the components. You are saying every component is connected, largest connected set. Okay, so these both are the largest connected sets, right? Is there any other set? Is there any other set which is largest connected that can form component of X? Okay, so yes. Why so? So singleton A and BCD will form the components because any other connected subset of X such as BD and all this are subsets of one of these components. Fine. So these are the largest connected subsets of X. And why these are connected? Okay, you are saying that it is largest connected, but why these both are connected? Singleton A and BCD, why these sets are connected? No separations. Okay, fine. You can say in that way also, no separation, and also you can say that these are
Okay, fine. Okay, so I hope you got this. Why these are the largest connected components. Fine. Shall we? Is it clear? Shall we move to the next question? Okay, we will discuss about it later. For the timing, is it clear? Okay. So shall we move to the next question? So the next question is that let P belongs to X and let AP is equals to this collection AI be the class of connected subsets of X containing P. Okay. So this is the class of connected subset of X containing P. Also, let CP is equals to union of all this AI over I. Okay. So then which of the following is incorrect? You need to find which of this following statement is incorrect. Okay. So is it option A that is CP is connected or option B that is if B is a connected subset of X containing P then B is subset of CP and option C is that CP is a component and option D says that none of the above. So let me know which of these option is incorrect. Okay, can you prove it? All the statements? Try to prove all these three statements. If you are saying that none of the above, then kindly prove the statements. So you're saying union of connected components whose intersection is non-empty is a connected set. Okay. So option A will be correct then. Next. Yes, by definition it is true. And what about a C? That CP is a component. How will we prove that it is a component? Yes. So how we will conclude it? If component is the largest connected set containing that point, then
Yes, so it is union. So obviously, fine. So you are getting it right. So let's see the answer. So the correct answer is none of the above. Why so? Because since each AI belongs to AP contains P, so P belongs to intersection over AI, and by the result, it is a class of connected subset of X with a non-empty intersection. Okay, so this will be connected. Fine. So we get that CP is equals to union of AI over I is connected. Fine. Next, if P is a connected subset of X containing P, then there will exist some B belongs to AP, and so that B will be subset of CP. Fine. That is union of this. Okay. So second option will also be correct. Now what about option 3? That let CP be subset of D. Let if possible, it is not a maximal connected. Okay. So what it will be? There will exist some other subset, right? Which is superset D, which is connected, right? So then P will belong to D, and hence by second, what we can conclude? Yes, it will contain P, and hence by second, what we can conclude? That that set D will be subset of CP, because any connected subset of X containing P is subset of CP, right? So D will be also subset of CP. So here we took that CP is subset of D, and here we got that D is subset of CP. That is CP is equals to D. Fine. So CP is a maximal connected subset of X. That is a component. Fine. So is it clear? The proof part? Okay. So shall we move to the next question? Okay. So the next question is, let I is equals to close interval 0 to 1, and let a function f from I to I be continuous. Then consider is the following statement correct? So you need to check is the following statement correct and justified. Okay. So there exists, the statement says that there exists P belongs to I such that f of P is equals to P. Okay. So is it true or false? Whatever you are getting, try to justify it with respect to topology. Okay. Try it.
You're saying that by IVP there exists an element X in I such that f of x is equal to P for all P belonging to I, f of I. Is it correct? Just think again. I think you have seen such statement. Yes, it is not given subjective. It is just given a continuous function. Have you seen such statement anywhere? We are not saying that for whole I. There exists a P belong to I such that at that point f of P will be equal to P. So you are not saying option A. Justification for it? Can you give justification for it? Huh, using IVP, what you are getting? And what about if you talk about like proving it by topologic using the terms in topological spaces? So how you will proceed for it? So are you trying to prove it or shall I discuss? Okay. So are you trying it or shall I move to the answer part? Just try the proof. Try to prove it. Okay. Okay. So yes, you are giving the correct like correct statements that should be used to prove it.
So let's see it. Okay. Okay. You got it. Other, are you getting it? Shall we discuss the answer? Okay. So this is what you might have, you know it by fixed point theorem, right? I hope you have heard about it in real analysis. So it goes like, yes. So if you have a function x in general, if you have a function f from x to r is a real continuous function defined on a connected set x, then f assumes as a value each member between any two of its values, right? It is by the connected set x. You might have seen this. Okay, this result. Now this can be interpreted geometrically. So consider the graph. So here, what function we have been given? It is from 0 comma 1 to 0 comma 1, right? So it lies in between this region, right? I square. Consider this region. So the theorem then states that a graph of f which connects a point at the left edge, okay, here of the square must intersect this diagonal, okay. So what do you mean by f of p is equal to p for any p belongs to x? That means that at some point you will get x is equal to y, right? That is, at some point in this diagonal, this function should cut this diagonal, right? That is fixed point theorem. Okay, so this theorem states that the graph of f which connects a point on the left edge of the square to a point on the right edge of the square must intersect the diagonal line delta at some point p comma p. Fine. So let's see its proof in terms of topological spaces. So how can we prove it? So consider if, so if f of 0 is equals to 0 or f of 1 is equal to 1, okay, then the theorem follows, right? This for 0 you are getting image as 0, and for 1 you are getting 1. So theorem is followed, right? The question lies for the remaining points, right, in between 0 and 1. So what about that? So hence if we can assume that f of 0 greater than 0 and f of 1 should be less than 1, right? Because it will lie in between this range. So f of 0 will be greater than 0 and f of 1 will be less than 1. So since f is continuous, the graph of the function, we can take this function as f from I to this closed interval I to this whole space R2 defined by f of x is equals to, we are taking this function as f of x is equals to tuple x comma f of x. Okay. So this function will also be continuous, right? Now let's take us two sets G and H. Okay. So consider here G, that is set consisting of coordinates xy such that x is less than y, and consider H, coordinates xy such that y is less than x. Okay. So x less than y, you will get this upper half part, and for y less than x, you will get this lower half part, right? So you will get these two sets G and H. Then you can see that 0 comma f of 0, where does it belongs? It will belong to this side, right? 0 and its image, it will belong in G, right? And 1 and its image, it will belong to which part? H part, right? So this point belongs to G and this point belongs to H. Hence, f of I does not contain a point of the diagonal, right? Uh, okay, now if you consider, you got these 2 points, now consider that, hence consider that if f of I does not contain a point of this diagonal, okay, we are trying to prove it with contradiction, okay. We need to prove that it contains this point of diagonal, but let us consider its contradiction. So what you are getting? So if it does not contain the point of the diagonal, so how it will look like?
diagonal, that is delta given by x is equal to y, that can be written as R2 minus G union H. Okay, so G union H is this part. So G union H is this part, right? This open part and this open part. Okay, so you are just taking off this diagonal part, so you will get diagonal as R2 minus G union H. Okay, now this G union H is what? Disconnection of f of I. Fine. But this contradicts the fact that f of I is the continuous image of a connected set is connected, right? So if we are taking these two sets G and H, and if we are taking that f of I does not contain any point of the diagonal, then we see that this G and H forms the disconnection of f of I, which is a contradiction. Why? Because continuous image of connected set I, that is f of I, should also be connected. Hence, this point P comma P should belong to diagonal. So f of P is equals to P. Okay. So this way you can prove by the contradiction that there will always exist a point P belongs to X such that f of P is equal to P. Okay. So I hope the proof part is clear to you. Is there any doubt? Please explain again. Okay, okay. From starting? Not from starting. We have to do f of 0 greater than 0 from there. Okay, from here. Okay, so we are trying to prove it topologically. So first of all, if f of 0 is equal to 0 or f of 1 is equal to 1, so what you will get? You will get the result, right? You need to find there exists P belongs to X such that f of P is equal to P. So if it is 0 mapping to 0, then or 1 mapping to 1, then it is obvious, right? So that part is done. Okay. Now, what if the real part is this inner part, right? So hence, if we can assume that f of 0 is f of 0 will lie will be greater than 0, right? And consider f of 1 less than 1. Okay, it will lie in between this. So the function f is continuous, right? This is continuous graph. Now consider a function f from I to R2. Okay, so I is our set 0 comma 1 close set to R2, that is this space. Okay, this graph part defined by f of x is equals to tuple x comma f of x. Okay, so this function will also be continuous. Why? Because f is continuous. Now let us set g as a set of x comma y such that x is less than y, and consider h as set consisting of points x comma y such that y is less than x. Okay, so what will be g? G will be this part, upper part, right? Open, because it contains points x which is less than y, so this will be here, and h will be this lower part, right? Because it contains all y, all xy such that y is less than x. Okay, so this you got two points. Now you can see that from here 0 and its image, this point lies in which part? G. And similarly 1 comma f of 1 lies in which part? H, right? Hence, now if we consider f of I, that we have to prove that this f of I that we have defined f function, so f of I does not contain a point of diagonal. Okay, we have to prove that if it contains a point of diagonal, right? So let's prove it with contradiction. So hence if consider f of I does not contain a point of the diagonal. So how does the diagonals look like? It is consisting of points xy such that x is equal to y. We can write it in this form. Why? Because g is this upper part and h is this lower part. So if you take g union h and if you take R2 minus g union h, so you will get the diagonal part, right? Now what you can see, this g and h, this forms a disconnection of f of I, right? Because it is open, disjoint. That is, it satisfies all this property to form the disconnection of f of I. Okay. But we have constructed f function from I to R2. Okay. So since I is connected,
So its image f of I should also be connected, right? But here we are getting disconnection. So here we get the contradiction. Therefore, the continuous image of a connected set is hence f of I contains a point p comma p that belongs to diagonal. Okay, so you will get a point p such that f of p is equal to p. Okay. Capital F uh, image of I under capital F does not contain boundary Uh-huh. of that No, image of. we have considered that for proving it with contradiction. No, no, you are saying that G and H are open. So I Uh-huh. am asking that f of capital F of I does not contain boundary of the square 0 1 cross 0 1 close 0 1 cross 2 0 1. It will contain boundary, no, ma'am. We have considered this. What we have to prove that f of y should contain boundary, right? Should contain this diagonal. We have to prove that thing, right? But you have assumed that G and H are open. Huh? But I think G and H are not open because interval is close 0 1. So it will contain the boundary, Okay, the not square you depicted in the picture. Can you prove it is G is not open? it is not containing this diagonal points, na? See, Can this you x prove is G is less than open? y. Yes, ma'am. So X is less than Y. what is g? This is x is equal to y, right? So this all part is g and this all part is h. Okay. We have Okay, okay, restricted ma'am. it on I. Okay. In G, you are not using F. G and H are independent of capital F. Yes, yes, yes. Okay, ma'am. Thank you. Is it clear? Yes. Just see it. So we will move to the next question. If it is clear. Shall we proceed? मैम जो सर ने जनरल प्रूफ करवाया था आईवीपी का, तो उसमें सर ने बहुत मतलब इजीली करवा दिया था। अब जैसे हम पर्टिकुलर केस कर रहे हैं तो ये तो थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट टाइप हो गया। सर कुछ इसमें डायरेक्टली हम डिफिकल्ट नहीं कुछ कर नहीं, आपको दो डिस्कनेक्शन ढूंढने हैं ना, मतलब दो सकते। हाँ। सेट्स ढूंढने हैं जो डिस्कनेक्शन फॉर्म करें। हम्म। सो वी हैव जस्ट फॉर्म टू डिस्कनेक्शंस, राइट? ठीक है। और कोई आप उसको ऑप्शन? एक बार देखना, इट इज ऑल्सो इजी। ओके। इजी तो है, समझ में आ गया, पर बता रहा हूँ कि मतलब थोड़ा सा ये डिस्कनेक्शन ढूंढना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है। उसमें कोई हम पर्टिकुलर डिस्कनेक्शन नहीं ढूंढ रहे थे जहां सर ने प्रूफ करवाया। ओके ओके, ठीक है। देखना, अगर ट्राई करना, इफ यू कैन फाइंड एन अल्टरनेटिव प्रूफ। ओके मैम। सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके। So the next question is, consider the following subset of the plane R2, A, as this set xy such that x square minus y square is greater than or equal to 4. Okay. So consider this set. Then which of this option is correct? That is, option A says that A is connected. Option B says that A cannot be written as union of two separated sets. Option C says that A is disconnected. Option D says that A and B are correct. That is, both these options are correct. So find it out which option is correct. Try it.
Saying option C. Okay. Can you justify it? Okay, so you're getting A is disconnected, right? So let's see the solution. Yes, the correct option is that A is disconnected. Okay, what you are saying, how we can prove it? Yeah, we can directly plot the set hyperbola given by x square minus y square, um, and then you can easily say that it is disconnected. Okay, that thing is, I guess, not. Okay, you can take intersections, but directly by the hyperbola, you can see that it is disconnected. Okay, let's see the proof part. So, A, that is given by, okay, separations. These will directly form the separation, right? This G and H will form separation. So, what is A? Xy such that x square minus y square is greater than equal to 4, right? So, this is given by these hyperbola 2 and minus 2, right? So, we can take G as this part, xy such that x is less than minus 1. Ma'am, if we take whole half right and half left plane, then it will also form the separation. Yes, so that's what we have taken. You can take that also. So this we are taking it from minus 1 and this we are taking it from 1. Okay. Yes, ma'am, with a intersection of G with A and intersection of H with A, because Hmm. we are talking in subspace topology of Yes, A. yes. So we are taking here G as this plane x less than minus 1 and this plane x greater than 1. Okay, if we are taken two sets G and H. Okay. So the thing that you are saying that we will take intersection of this to form the disconnection of A. Okay, because it is a subspace. हम जब तक उनका इंटरसेक्शन नहीं लेंगे ओपन ही नहीं होंगे ना ए में। हाँ हाँ पहले तो इंटरसेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो ये वाला पार्ट हाफ प्लेन ओपन हो जाएगा, राइट? और ये वाला भी ओपन है। ये पूरा नहीं हाफ ओपन होगा ना, -1 की तरफ में जाएगा। मैं पूरा H प्लस H माइनस ले रहा इंटरसेक्शन उसके ए के साथ। H प्लस इंटरसेक्शन है, H माइनस इंटरसेक्शन है। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है, वो भी ले सकते हो। ये मैम अभी डिस्कनेक्शन नहीं बना रहा है आपका जी और एच। इसका जब आप इंटरसेक्शन लोगे ए के साथ, जी इंटरसेक्शन ए और एच इंटरसेक्शन ए लोगे, ओके, डिस्कनेक्शन ऑफ ए। हाँ, दैट विल फॉर्म अ डिस्कनेक्शन ऑफ ए। दिस इज इनकम्प्लीट, ओके, हियर, फाइन। यस मैम। Okay, so shall we move to the next question? So the next question is, state whether the following statement is true or false and justify it. So the question is that the statement is that the real line R with the topology tau generated by the open closed intervals
A comma B is totally disconnected. Okay, so is it true or false? So the statement goes like the real line R, take the real line R with this topology tau generated by this open close intervals. So is it, it is totally disconnected, true or false? Okay, so you are saying true. Can you justify it? How you are getting it totally disconnected? Try to justify it if you are getting it as true. So why so? Okay, so yeah, going through the right. So let's see the solution part. Okay, let's see the solution. So yes, it is true. How we can prove it? Let So we have that a topological space X is said to be totally disconnected if for each pair of points P comma Q belongs to X, there is a disconnection G union H of X with P belongs to G and Q belongs to H. Okay, that is only one point should be there. Okay, so let P comma Q belongs to R. So let P less than Q. Then let us define G as minus infinity to P and H as, here it is closed. So minus infinity to P, we are taking it as G, and from P to infinity, we are taking it as H. Okay. These are open disjoint sets whose union is R. Fine. Because it is having this topology contains sets like this. Fine. So these are open and also both are disjoint G and H whose union is whole R. Right. That is, we got that G union H is disconnection of R. Right. But P, you can see that this point P belongs to G, and since Q is greater than P, it will belong to H. Okay. So if you are taking any 2 points P comma Q, so one will belong to this part and one will belong to this part. Fine. Hence we can say that R comma tau is totally disconnected. Fine. So by the definition, we, yes. One definition says that any component containing X is singleton, Yes. then that topological space is totally disconnected. Hmm. And here you are saying that the topological space X is said to be totally disconnected if for each pair of point PQ belongs to X, there is this disconnection G union H of X with P belongs to G and P belongs to H. Yes, that Can we means that you got two.
two open sets, right? G and H. Fine. Sure. And can we conclude from here that every component will be singleton? That is also a definition, and this is also a definition for totally Oh, disconnected set. no, ma'am. Both should be equivalent. Okay, okay. Listen, see what this statement says that if you form disconnection, okay, of this space X and take any 2 points from this space, okay, so one will belong to this part and one will belong to another part. Like both these points together are not part of this one. That means a singleton, right? It will contain only a single point, not the other point. We are taking any arbitrary 2 points, right, from X. So we are seeing that only one point belongs to this part and one point belongs to H. This is interval. How you will talk about the singleton set here? Yeah, it is possible in terms of rationals, but here, how will take that? That justification is true that it should be singleton. That is component of X is a singleton set. But how you will justify it here? So it can be justified it like that. If you are taking any 2 points, so one will be the part of G and one will be part of H. No 2 points will be simultaneously part of one open set. Okay. Here you are not saying that G and H are connected. What? P and Q are related to each other if No, there no, no. exists a connected set, both belongs to that set, connected set. Then P and Q are said to be related to each other. This P and Q are arbitrary. They are not related to each other. See the definition? A topological space X is said to be totally disconnected if for each pair But of points, if you are taking any two pairs, PQ, so there exists a disconnection. You will find disconnection G union H of X such that P will be part of G and Q will be part of H. तो इससे ये प्रूव हो गया कि हर एक पॉइंट का जो कंपोनेंट होगा वो सिंगलटन वही होगा, मतलब वही एलिमेंट आएगा केवल। हाँ, क्योंकि पी और Q लोग मतलब जो इक्विवेलेंस की हम लोग डेफिनेशन लेके चले थे रिलेशन की, उसमें हमने ये कहा था कि पी और क्यू दोनों रिलेटेड होंगे यदि कोई ऐसा कनेक्टेड सेट एग्जिस्ट करे सच दैट तो पी इसमें एंड क्यू P और बिलोंग। Q रिलेटेड नहीं हो पा रहे हैं ना, क्योंकि एक आपको G में मिल रहा है, एक आपको H में मिल रहा है। सो आर दे बोथ रिलेटेड? क्या आपको ये दोनों पॉइंट रिलेटेड मिल रहे हैं इस डेफिनेशन से? रिलेटेड कब ये होंगे? X इज रिलेटेड टू Y इफ X एंड Y दोनों एक ही कंपोनेंट में लाई करे, राइट? तब हम कह रहे थे कि वो रिलेटेड है। बट यहाँ पे G एक कंपोनेंट है, H एक कंपोनेंट है। इससे ये तो नहीं प्रूव हो जाता ना कि कोई ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दिस इज वी आर टॉकिंग फॉर जनरल। नहीं मतलब ये जी और एच तो आपने पर्टिकुलर ले लिए ना यहाँ पर। नहीं, पर्टिकुलर मा- नहीं है। लाइक वी आर टेकिंग G यूनियन G, P और Q से डिफाइन हो रहा है, राइट? P और Q आर्बिट्ररी है, तो उन G पी और और H भी क्यू तो के लिए उन पी और क्यू के लिए तो जी और एच आपने पर्टिकुलर टाइप के ले लिए ना। हाँ। इन पी क्यू के लिए तो और भी सारे जी और एच एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, लाइक कि पी एंड क्यू बोथ बिलोंग्स टू जी। मान लीजिए कोई इंटरसेक्शन मिल गया हमको, जी इंटरसेक्शन एच मिल गया। P और Q R में है, ठीक है, तो ऑब्वियसली P लेस देन Q होगा या Q लेस देन P यस। होगा, ऐसा कुछ मिलेगा आपको, राइट? हम्म। ठीक है। आपने G एक ऐसा सेट बनाया जो है माइनस इंफिनिटी से क्लोज्ड P तक, ठीक? हम्म। और Q इज हम्म। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन P, तो वो इसमें तो हम्म। रहेगा ही नहीं, राइट?
तो हर कोई पी और क्यू, अगर आप दो कोई एलिमेंट ले रहे हो तो आपको इस तरह के दो सेट्स मिलेंगे, राइट? आप कोई भी दो रियल नंबर ले लो, आपको इस तरह के दो सेट्स मिल जाएंगे। मैम इस डेफिनेशन से तो जो पूरा सेट है वो हमें डिसकनेक्टेड शो हो रहा है, ठीक है। हमें हम्म। ये ऐसे सेट मिल जाएंगे कि ये सेपरेशन बना लेंगे पूरे एक्स का। हम्म। पर क्या ये जरूरी है कि कोई अगर सेट हमारा मतलब कि पूरा जो हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है वो अगर डिसकनेक्टेड है तो हम ये कह देंगे वो टोटली डिसकनेक्टेड हो जाएगा? नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। यहाँ हमने दोनों चीज प्रूव की है कि जी यूनियन एच जो है वो डिस्कनेक्शन फॉर्म कर रहा है, बट ऑल्सो दिस थिंग इज ट्रू। ये भी ट्रू होनी चाहिए। और सेकेंड थिंग दैट एक एलिमेंट बिलोंग टू जी एंड अनदर एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू एच। ओके। ठीक है मैम। ठीक है। यस मैम, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा और थोड़ा अच्छे से। ठीक है, ठीक है, मतलब जस्ट मुझे गो ये थ्रू इट। चीज पता है कि ये इसका सिंगलटन बनेगा। ठीक है, मतलब एक ऐसे बार। दिखा, ऐसे दिख रहा है पर वो लिख के नहीं दिख पा रहा है, लाइक प्रूफ टाइप प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ट्राई करो। वी विल ऑल्सो डिस्कस इट। ठीक है। मैम शेयर कर दीजिएगा यदि प्रूफ मिले आपको तो। कि ये सिंगल्टन क्यों है। जी। ठीक है। ठीक है, इज इट क्लियर फॉर द टाइमिंग? यस मैम। मैम जो मैंने आर्गुमेंट दिया है ना कि कोई दो एलिमेंट अगर कोई हम कोई ऐसा सब सेट लें उसका जिसमें मतलब दो एलिमेंट से ज्यादा हो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो तो वो डिसकनेक्टेड होगा। नहीं समझ में आ रहा, कैन यू रिपीट? हम कोई ऐसा सबसेट लें आर का हम्म। जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो तो वो तो इस टोपोलॉजी में डिसकनेक्टेड होगा। इसमें तो है ना, बहुत सारे पॉइंट्स है। दिस इज इंटरवल, ओके, सो इट इज कंटेनिंग इनफाइनाइट पॉइंट्स। हम्म। तो ये मतलब स्टेटमेंट गलत है कौन सा स्टेटमेंट? कि हम कोई भी मतलब कि ऐसा सेट लें जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट हो तो वो डिसकनेक्टेड होगा। ओके, देखो, एक और बार डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है डेफिनेशन। सो अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेट टू बी टोटली डिस्कनेक्टेड इफ फॉर ईच पेयर, अगर आप कोई भी दो पेयर ले रहे हो तो उसके लिए आपको एक डिस्कनेक्शन मिल जाए। ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हम्म। कि इस इंटरवल में केवल एक ही पॉइंट रहेगा। यस मैम। वो नहीं कह रहे कि इस इंटरवल में खाली पी रहेगा और इस इंटरवल में खाली क्यू रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तो इन्फिनाइट पॉइंट्स है। लेकिन ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इफ यू आर कंसिडरिंग टू पेयर ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू, देन देयर विल एग्जिस्ट डिस्कनेक्शन। आपको एक डिस्कनेक्शन जरूर मिलेगा सच दैट पी बिलोंग टू जी एंड क्यू बिलोंग टू एच। ठीक है। यस तब मैम। आप कह सकते हो कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस टोटली डिस्कनेक्टेड है। क्लियर? इसमें एक सेपरेट क्वेश्चन है मैम एक हम्म। कि इसमें और सेट्स कौन कौन से हो सकते क्या चीज? हैं और कोई इसमें कनेक्टेड सेट हो सकते हैं इस टोपोलॉजी में और कोई कनेक्टेड सेट है सिंगलटन्स को छोड़ के? नहीं फिलहाल समझ यहाँ पाए। हम सिंगलटन की बात नहीं कर रहे। ओके, जस्ट थिंक वंस अगेन, जस्ट गो थ्रू दिस डेफिनेशन, ओके, एंड दिस प्रूफ। एक बार मैम देखो। मेरा क्वेश्चन, मैम नहीं, क्वेश्चन ये है कि इस टोपोलॉजी में कोई और सेट्स हैं जो कनेक्टेड हों? ये सारे सेट्स जो है वो कनेक्टेड ही है ना। अगर ये सारे कनेक्टेड हैं तो फिर वो वाली डेफिनेशन तो फिर फेल हो जाएगी मैम। इनके क्या? कंपोनेंट सिंगलटन कहाँ आएंगे फिर? दैट माइनस डेफिनेशन। इन्फिनिटी। हाँ जी। ओके, आई प्रोवाइड द लिंक बिटवीन टू, ओके, बोथ द डेफिनेशंस। आपको लिंक नहीं मिल रहा, राइट? कि वो सिंगलटन की बात कर रहे थे एंड हियर इट इज सेइंग दैट यू कैन फॉर्म अ डिस्कनेक्शन। बोथ दिस डेफिनेशंस आर टोटली डिफरेंट, राइट?
So you दोनों need to, इक्विवेलेंट हो है मैम। हाँ दोनों इक्विवेलेंट है। आई प्रोवाइड यू विद द कनेक्शन बिटवीन दिस, ओके। ओके मैम। ठीक है, आप भी ट्राई करो। ठीक है, यस मैम। ओके। सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। Are you still stuck here or shall we move to the next question? मैम Huh? ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. So the next question is state whether the following statement is true or false. So the question is, let G union H be a disconnection of A, then A intersection G and A intersection H are not separated sets. Is it true or false? Again, I am repeating, G union H is a disconnection of A, then A intersection G and A intersection H are not separated sets. Yes, you are getting it as false. Can you try to justify it? Like hints? How can we proceed to prove it? मैम ये जी और एच डिस्कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, तो जी एंड एच विल बी ओपन सबसेट्स ऑफ ए। Yes. तो जी सबसेट ऑफ ए एंड एच इज सबसेट ऑफ ए। तो Hmm. ए इंटरसेक्शन विल बी जी एंड ए इंटरसेक्शन एच विल बी एच। Hmm. तो हो गया। What is the definition of separated sets? यानी कि वो जो क्लोजर के साथ क्लोजर and G are said to be separated if A intersection, sorry, G intersection its closure is empty and H intersection its closure is empty. ये सबसेट है ना? कौन? ए सबसेट है, राइट? ये सबसेट है हाँ। ठीक है, और G यूज तो ए डिस्कनेक्शन। इंटरसेक्शन जी और ए इंटरसेक्शन एच सेपरेटेड कब होंगे? जब ए इंटरसेक्शन जी का क्लोजर इंटरसेक्शन विथ ए इंटरसेक्शन एच लोगे,
क्या आना चाहिए? empty एम्प्टी वाला। आना चाहिए, राइट? और इसी तरह वाइस वर्सा। हाँ, और फिर वाइस वर्सा। ठीक है, सो यस इट विल बी false. So let's see the proof part. उनसे So पीछे करिए। हाँ ये जी यूनियन एच बी है, क्या लिखा है आपने, डिसकनेक्शन। हाँ हाँ, बी अ डिस्कनेक्शन ऑफ ए। जी यूनियन एच कैसे डिसकनेक्शन हो, डिसकनेक्शन में तो एक पेयर चाहिए होता है ना। ओके, प्रूफ देखो समझ में आएगा, ठीक है? नहीं, ये जी यूनियन एच का डिसकनेक्शन कैसे है। जी यूनियन एच जो ए सबसेट है उसका डिस्कनेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब जो सेट मतलब होगा ए, उसके लिए आपको डिसकनेक्शन जो जी और एच पेयर। करके कुछ पेयर्स मिलने चाहिए। ठीक है मैम, तो आप गलत लिखी है, मतलब क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा अच्छा ठीक है। लैंग्वेज। सो ए इंटरसेक्शन जी एंड ए इंटरसेक्शन एच तो डिसजॉइंट हो जाएंगे, ठीक है? गलत। ऐसे ही है ना डेफिनेशन? एक मिनट। डिसकनेक्शन में दो पेयर चाहिए होते हैं, आपने जी यूनियन एच लिया है जैसे सेट है एक वो तो। वेट वेट, और आप ये बोलते जी एंड एच आर डिसकनेक्शन, ये तो देखो फिर यहाँ पे let x tau be a topological space and e subset of x अगर है, so A is disconnected if there exist tau open sets A and B such that E is subset of A union B. Okay, तो वो A और B क्या फॉर्म कर रहे हैं? डिस्कनेक्शंस फॉर्म कर रहे हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, तो वहां पे भी G यूनियन H जो है वो डिस्कनेक्शन फॉर्म कर रहा है। ओके, नहीं, आप समझी नहीं। ये यहाँ पर जब हम ई एक सबसेट लेते हैं तो उसमें सब स्पेस टोपोलॉजी की बात करते हैं। तो तो वहां भी हम उसमें सब भी तो स्पेस की ही बात कर रहे हैं, राइट? वहां पर सब स्पेस की बात कर रहे हैं, पर जो डेफिनेशन होगी डिसकनेक्शन की तो वही होगी ना कि उसमें हमें एक सेपरेशन मिले हमको, दो हाँ सेट हमें दैट्स, ओपन सेट। यस मैम। तो वही ए और बी मिलेगा, और जो आपको सेपरेशन की बात कर रहे हो वो आ जाएगा ना, ई इंटरसेक्शन ए और ई इंटरसेक्शन बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन जी और ए इंटरसेक्शन एच। ओके, ओके मैम। सो हियर सी, सो बाय द डेफिनेशन इटसेल्फ, क्योंकि जी एन एच डिस्कनेक्टेड है, मतलब डिस्कनेक्शन फॉर्म कर रहा है, सो ए इंटरसेक्शन जी एंड ए इंटरसेक्शन विल बी डिसजॉइंट, फाइन। Hence, we need only show that each set, this A intersection G and A intersection H, that is, each set contains no accumulation point of the other. Fine. That is, A intersection G closure intersection A intersection H should be empty, and A intersection G intersection A intersection H closure should be empty. Okay. So we need to prove that. So let P belongs to accumulation point of A intersection G, and suppose a P belongs to A intersection H also. Okay. So what we'll get, since H is an open set containing P, therefore H contains a point of A intersection G distinct from P. Fine. So what you'll get, A intersection G intersection H will be non-empty, right? But we saw that these are disjoint, so A intersection G intersection A intersection H should be empty. So this is a contradiction. So this implies this P does not belongs to A intersection H. Okay. Similarly, if P is an accumulation point of A intersection H, then P does not belongs to A intersection G. Okay. So in this way, we can prove that uh, in either way, the accumulation point of one set does not is not a part of other.
इसमें एक ओके। क्वेश्चन है इसमें। हाँ। मैम जैसे आप जी और एच को कह रहे हैं कि ये उसका सेपरेशन फॉर्म कर रहे हैं, मतलब डिसकनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं। तो जो डिसकनेक्शन फॉर्म करने की डेफिनेशन होती है कि वो दोनों जो सेट होते हैं वो उसमें टोपोलॉजी में, उस टोपोलॉजी में ओपन होने चाहिए, और फिर जो भी कंडीशंस हैं आगे। हम्म। तो ये जो जी और एच हमारी ए का डिसकनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो जी और शुड बी ओपन इन ए with respect to subspace topology. हम्म। So G must be equal to A intersection some tau open set, हम्म। or S should be A intersection some tau open set. So both G and H are subset of A. हम्म। ठीक है। तो जब हम G इंटरसेक्शन A लेंगे तो फिर से G आ जाएगा, G इंटर नहीं H नहीं, इंटरसेक्शन A। आप जो ये जो जी है ये टाउ ओपन है, और ये जो एच है वो टाउ ओपन सेट है। ठीक है। ये कोई एक दूसरा ओपन सेट फॉर्म करेगा, ये इंटरसेक्शन जी। ठीक है। इसको सी ले लो। ये कोई दूसरा ओपन सेट फॉर्म करेगा, डी ए इंटरसेक्शन एच। ये जी और एच, दीज आर ओपन इन टाउ। मैम सर ने डेफिनेशन लिखवाई थी कि जो हम उसकी डिसकनेक्टेडनेस की बात करते हैं सब स्पेस टोपोलॉजी में, तो उसमें हम सब सॉरी किसी सबसेट में जब हम बात करते हैं उसके कि वो डिसकनेक्टेड है या कनेक्टेड है, तो हम सब स्पेस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। हम्म। तो जब सब स्पेस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर कोई दो सेट हैं, ए के सब वो डिसकनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, तो वो जी और एच हमारे ए में ओपन होने चाहिए ना। इसमें आपने यहाँ पर लिख रखा है कि जी और एच डिसकनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं ए का, तो जी और एच को तो ए में ओपन होने चाहिए ना मैम, अगर सब टोपोलॉजी की बात। वो डेफिनेशन में वैसा है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन जी, ए इंटरसेक्शन एच ले रहे हो, नॉन एम्प्टी ले रहे हो, ठीक है, डिसजॉइंट ले रहे हो, वो सारी प्रॉपर्टीज अगर आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो, तब वो जो जो जी यूनियन एच होता है उसको डिस्कनेक्शन बोलते हैं, जिसका ए क्या होगा, सबसेट होगा। यस मैम। ओके। अच्छा ये आप उसके टाउ के रिस्पेक्ट में बात हाँ टाउ में ओपन होने चाहिए। हाँ हाँ। वो जो प्रॉपर्टी जो थ्योरम आपने दिखाई थी पीछे, उसको हम्म। सेटिस्फाई करें तो फिर ये उसका वो कहेंगे, डिस्कनेक्शन कहलाएंगे। हम्म। कुछ गड़बड़ है मैम, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। डेफिनेशन सर ने ही कराई थी। हैव यू सीन थ्री, जो मतलब लेक्चर वीडियोस में है वही डेफिनेशन है। ठीक है। ओके, आई हैव नॉट टेकन फ्रॉम एनीवेयर। ओके। ठीक है, एक बार देखो। आई ऑल्सो सी इफ देयर इज समथिंग। ओके। यस सर। बट इट इज लाइक दैट ओनली ना, कि अगर आपके पास, हाँ यहाँ पे अगर आपने एक सबसेट ई लिया है एक्स का, सो यू आर गेटिंग ए एंड बी टोटली, मतलब जो डिस्कशंस आपको मिलेंगे इन दिस फॉर्म, राइट, ए एंड बी, वेयर ई इंटरसेक्शन ए आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी यू विल गेट दिस पार्ट। So in general, we say that A union B forms the disconnection. और जो हम अब ये, टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में वहां पर तो हम ओपन सेट से लेते हैं, मतलब जो डिस्कनेक्शन फॉर्म करते हैं पेयर, वो हम हाँ, टाउ में ओपन लेते हैं। और यहाँ पर आप ए और बी को कह रहे हैं डिस्कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर हम सब स्पेस टोपोलॉजी में ओपन सेट्स देखते हैं तो वो इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन सम तो टाउ ओपन सेट, E इंटरसेक्शन है, तब हम लेकिन हम टाउ ई में नहीं देख रहे हैं, टाउ में देख रहे हैं। टाउ में तो ठीक है, ए और बी ओपन सेट्स हैं। हाँ, तो उसमें बात कर रहे हैं हम, मतलब
टावी में बात नहीं कर रहे हैं. ओके मैम. दिस इज डिस्कनेक्टेड सबसेट्स. ओके. यस. ठीक है, सबस्पेस टोपोलॉजी में बात नहीं कर रहे हैं. ओके मैम. ठीक है. यस मैम. सो जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन और फिर वो देखो क्लियर हो जाएगा. ओके. ओके मैम. बाहर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. So consider the following statements. So first statement is a set A is connected, and second statement is A is not the union of two non-empty separated sets. Okay. So which of these options is correct? That is, option A says that only one implies two. Option B says that two implies one only. Option C says that one if and only two. That is, both are if and only statements, or none of the above. See what you are getting. Option C, that is, it is if and only if, right? Okay. So, shall we move to the proof part, or you are trying to prove it? Okay. So yes, it is if and only if statement. How? That we show equivalently. The statement is what? That if it is if and only if, then a set A is connected if and only if A is not the union of two non-empty separated sets. So we can prove it as A is disconnected if and only if A is union of two non-empty separated sets. We can prove in negation form. Okay. So equivalently, that A is disconnected if and only if A is the union of two non-empty separated sets. Okay. So we will prove this part. So suppose first part, that A is disconnected. Okay. And let G union H be disconnection of A. Okay. So then you can write A is the union of non-empty sets A intersection G and A intersection H, which are separated. Okay. We have seen just earlier, just in the previous example, we proved that this form the separation. On the other hand, if A is the union of two non-empty separated sets, then A is disconnected. Okay. This statement we proved in the last lecture. Fine. So yes, from these two, we can conclude that these two statements are if and only if statements. Okay. So a set is connected if and only if it is not the union of two non-empty separated sets. Fine. So I hope it is clear. So shall we move to the next question? मैम अब सेकंड पार्ट फिर से प्रूव करेंगे क्या? ये वाला मतलब वो हाँ अर्लियर प्रूव ये कर चुके लास्ट हैं बट लेक्चर में कराया था. यू कैन गो थ्रू इट इफ इट देयर इज डाउट. ओके मैम. ओके. यस. ठीक है. So shall we move to the next part? Next question.
यस। So the next question is, consider the following subset of the plane R2, um, where A is this set 0 comma y such that half is less than equal to y less than equal to 1, and B is the set xy such that y is equal to sine 1 by x, where lies in between 0 and 1. Okay. Then state which of this following statement is correct. A says that A and B are separated sets. B says that A and B are not connected. C says that A and B are not separated sets. Okay, D, none of the above. So tell me what will be the correct answer. So you're getting A and B are separated sets. Are you sure? What is the definition of separated sets? A intersection B closure is empty and B intersection A closure is empty. So is it satisfying? A closure will be again this interval, right? Half to 1. What is B closure? Or B limit close points? B यूनियन सिंगल डी नहीं है। Huh? जीरो होगा क्या इसका लिमिट पॉइंट बी का? That's what I'm asking you. जीरो होगा शायद। But मैम इसकी ग्राफ जो होता है वो जीरो के पास कई बार मतलब ऑसिलेट करता है बहुत क्लोजली। साइन वन बाई एक्स। hmm. ऐसे ही हम वाई एक्सिस के पास पहुंचते हैं तो वो वहां पर बहुत ज्यादा मतलब ऑसिलेट करता है। So उसका तो मुझे लगता है कि शायद ओरिजिन हो जाएगा उसका लिमिट पॉइंट। ठीक है। है ना? हम्म तो वो क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B क्लोजर एम्प्टी आएगा तब। इसमें तो ओरिजिन है ही नहीं ए में हम्म और क्लोजर में भी शायद नहीं है। क्लोजर तो वही आ रहा ए क्लोजर इज ए। हम्म तो तो B क्लोजर एक्सपेक्टेशन में हो जाए। ओरिजिन नहीं, बट इसके कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं A के। मैम वाई एक्सिस का कोई पॉइंट दिख तो नहीं रहा इसमें बी में। मतलब पूरी वाई एक्सिस तो इसमें आएगी नहीं आएगी। ऐसा है ना कुछ।
This is from half to 1, this part, and b ये a हो जाएगा, यस मैम। और b आपका साइन 1/x, ओके, जो मतलब इसके पास ऑक्सीलेट करता हुआ आ रहा है, राइट? हम्म। सो वेयर इसके एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या क्या है, मतलब डज इट लाइज इन ए accumulation point of this sin 1/x, where x lies in between 0 to 1? आ जाएंगे मैम। Hmm? आ जाएंगे। आ जाएंगे ना? आ जाएंगे। मतलब ये ओके, पूरा ये आ जाएगा शायद। हाँ, ओके. यस। So from here you can see that A and B are not separated sets. Why? Because A intersection बी B को closure is not empty. Okay? बी आ जाएगा पूरा। वो सॉरी ए आ जाएगा। हाँ. ए इंटर बी क्लोजर इज ए। हम्म. A मैम and इसको B, मतलब शो कैसे कर सकते हैं? you try to show it मतलब थोड़ा ये graphically. हार्ड है। हाँ, एक्चुअली ये आप नेक्स्ट लेक्चर्स में देखोगे इसके बारे में. आई जस्ट पुट इट बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू दिस आवर स्टेटमेंट, जो हमने अभी दैट वी प्रूव्ड इन द लास्ट क्वेश्चन. सो in accordance with that I put it. This is a special case, so you will get questions on that, or this will be discussed in the coming lectures, so you will get it there. बी को टोपोलॉजिकल स्पेस बोल। किसको? सर टोपोलॉजिस्ट कर्व। हाँ, टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व. साइन कर्व। यस मैम। सुना था कभी। हम्म. तो उसके बारे में देख लेना, ठीक है? तो यू विल गेट हाउ इट इज कन्वर्जिंग टू दिस ए. ओके. यस मैम। कोई ग्रूम्स स्पेस भी होता है क्या? हम्म. That will come in the coming lectures. Okay. Yes, So shall we move to the next question? Hence correct option will be मैम। C. That is A and B are not separated sets. Huh? ये कनेक्टेड What इज happened? बी कनेक्टेड इज बी कनेक्टेड। Yes, yes. B is connected. ओके। This will be not satisfied because A and B are connected. This is connected. You will see it in the coming lectures how this is connected. Okay. ठीक है. Shall we move to the next question? यस मैम। Okay. So next question is, consider the sets A, uh, where it is xy such that x square plus y square is less than equal to 1, and B is equal to x comma y such that x minus 2 whole square plus y square is less than 1. Okay. So consider these two sets. Then which of these options will be correct? Is it option A, that is A and B are disjoint? Is it option B, that is A and B are separated? Or option C, that is A union B is disconnected? Or option D, that is both B and C are correct? So check what you are getting.
So you are saying A and B are disjoint. What about the other options? This is not correct. That you are saying that A and B are separated is wrong and A union B is disconnected. This is also incorrect. How to prove that? डिसजॉइंट तो है. A and B are disjoint. That is true, right? How to disprove this too? A and B are separated. A and B are separated because the definition is not satisfied. Huh. That is A closure intersection. A closure intersection B is Not non-empty. A closure. No. A जो intersection मैम B closure, right? कोई भी मैम कर लीजिए. B intersection A closure is even not empty. B हाँ. intersection A closure is A non-empty. closure intersection B is also not empty. Okay. So A and B are separated. It's incorrect. A and B are not separated. Sorry, A and B are not separated. So A intersection B closure is non-empty. So you get that A intersection A and B are not separated. And by the result that we proved that if A and B are connected sets, okay, A and B are connected sets and which are not separated, then A union B is connected. We just proved in the previous example. So here A and B both are connected, but they are not separated. Okay. So by the proof, we can see that A union B is connected. Fine. हम ये कहाँ पर करेंगे? वन पे. हाँ, क्या चीज? वन पे करेंगे ना. हाँ हाँ. Both these will intersect at x is equal to 1. Yes, yes, yes. 0. Yes, ma'am. Okay. So this way we disproved these 2 points and we got that A and B are disjoint. Now it is clear. Shall we move to the next question? Yes, ma'am. Okay. So these were the questions that we discussed. Okay. So do you have any doubt in the previous questions? Any questions? मैम इसमें ये कनेक्टेडनेस और डिसकनेक्टेडनेस जो भी है, इसमें मैम ज्योमेट्री कितना रोल प्ले करती है? मतलब क्या ये कनेक्टेडनेस और डिसकनेक्टेडनेस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज्योमेट्री से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, मतलब केवल ज्योमेट्री हाँ. देख के? Most of the questions related to connected and disconnected you can directly like in general आप उसको ग्राफ के थ्रू ज्योमेट्रिकली कर सकते हो बिकॉज इफ इट इज इन जनरल सो इट शुड बी ऑल्सो ट्रू फॉर आर और R2 फॉर यूजुअल टोपोलॉजी और यूक्लिडियन टोपोलॉजी राइट तो अगर कोई भी स्टेटमेंट कोई भी थ्योरम इफ इट इज ट्रू फॉर जनरल सो इट शुड बी ट्रू फॉर R comma tau with usual topology or R2 with Euclidean topology right so you can directly see from there if it is satisfying for this then it will maybe it will satisfy for all and if it is dissatisfied for this then in general तो dissatisfy हो ही जाएगा right what कोई is ओपन मैप है कोई मैम, तो क्या वो हर एक कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड सेट पे मैप करता है? कोई ओपन मैप है यदि तो? okay the definition of open function is that every open set is mapped to open right Yes, ma'am. so उसमें हम in general बोल तो नहीं सकते कि it will be connected मैम ट्रू है ये स्टेटमेंट, देखा है मतलब मैंने. इज दिस सेशन ओवर? no it is still going okay so it's is it true for open and closed sets open maps right that connected spaces is mapped to connected यस मैम. if the function is open or the function is closed
I'm not sure for closed map, but I'm pretty sure that for open maps, connected sets are mapped to connected sets. Okay, so we can prove it, like how we will proceed with that. So if you are considering any open set in the domain part, so it will be mapped to open set, right? So Every for connected set, every connected set is closed, ना? हाँ. तो ओपन ओपन मैप को वो ओपन मैप पर मैप करता है, मतलब तो जो कनेक्टेड सेट हैं हमारे, तो वो ओपन होंगे नहीं। तो वो ओपन मैप कहीं भी मैप कर सकते हैं, क्लोज मैप क्लोज सेट्स पर भी और ओपन सेट्स पर भी। हम्म. और मान लीजिए उसने क्लोज कनेक्टेड सेट को किसी ओपन सेट पे मैप कर दिया, हम्म. तो वो सेट नहीं रह जाएगा फिर। I am not sure about this statement. I'm just मैं एक बार में गूगल करता हूँ एक बार। for continuous functions it is true. यस मैम, बट एवरी ओपन मैप नॉट बी कंटिन्यूअस। एक्चुअली क्वेश्चन उसमें आया है असाइनमेंट। अच्छा, सो वो तो यस डिस्कस मैं कर भी नहीं सकती, राइट? यस। सो जस्ट सी व्हाट यू आर गेटिंग. फिटनेस और ये सेपरेबिलिटी जहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब वाइडली पूछे जाते हैं जो एग्जाम्स हैं, हाँ. मतलब लाइक सीएसआई गेट है, इनके क्वेश्चन मतलब और कहाँ से हम लोग ट्राई कर सकते हैं मोर क्वेश्चंस। मेट्रिक, तो मतलब इन पर्टिकुलरली आप मेट्रिक टोपोलॉजी में भी बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो, मतलब मेट्रिक स्पेसेस में भी देख सकते हो, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो, एंड मोस्ट इसी में आर से आर टू से रिलेटेड ही रहते हैं। हाँ, तो मेट्रिक स्पेसेस में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जनरली आपको बहुत सारे अवेलेबल है रिलेटेड टू सेपरेटेड एंड कनेक्टेड डिसकनेक्शन, बहुत सारे रिजल्ट्स है इससे रिलेटेड, थ्योरम्स है इससे रिलेटेड, लाइक एक पूरा पार्ट होता है, राइट? यस इन मैम। मेट्रिक स्पेसेस तो यू विल गेट इट अगर इन एन. कुछ मतलब हुआ आपके पास मैम मटेरियल, तो काइंडली शेयर इट इन ग्रुप। No, I don't have like as such any material. हाँ, कुछ books and metric spaces. I have seen like lots of question for that there. और ऑनलाइन भी आपको वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट? सेपरेटेड स्पेसेस और इससे रिलेटेड, और आर और आर टू में तो यू कैन डायरेक्टली विजुअलाइज इट विद ज्योमेट्री. यस मैम। बस जो डेफिनेशंस है या थ्योरम के स्टेटमेंट्स है कि कब कनेक्टेड होगा कब डिसकनेक्टेड, डिसप्रूफ करने के लिए आपको बस लाइक डिसकनेक्टेड के लिए इजीली प्रूफ कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉपर सेट मिल जाए जो ओपन और क्लोज दोनों भी हो, राइट? हम्म तो वहां से तो आप हम्म। डायरेक्टली प्रूफ कर पाओगे. तो मैम जो हम लोग डिस. ने डेंस सेट्स पढ़े हैं, पर एक कॉन्सेप्ट और आता है नो वेयर डेंस डेंस इन इटसेल्फ। उस पे शायद ये एक सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था ना. हाँ वो एक था, उसमें आपने ये रिजल्ट यूज किया था कि इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज एम्प्टी, तो वो हम्म. ने नो वेयर डेंस आपने हम्म. बताया। हम्म. मतलब उसमें और भी कुछ है क्या कॉन्सेप्ट? पर्टिकुलरली एक्चुअली वो डिस्कस हुआ नहीं था, राइट? लेक्चर्स में नो हाँ एविडेंस लेक्चर्स का. में नहीं हुआ। नो। हाँ. और वो डेंस इन इटसेल्फ भी सर ने कोई मेंशन नहीं हम्म.
और एक So क्वेश्चन है कि ये बाउंड्री पॉइंट्स और फ्रंटियर पॉइंट्स का मतलब एक आता है boundary points are फ्रंटियर पॉइंट, FRONTIER, frontier फ्रंटियर points. पॉइंट। यस। हम्म। तो ये मतलब दोनों कैसे मतलब डिफरेंट होते हैं? कई जगह पर डेफिनेशंस में है कि वो दोनों को सेम लेके चलते हैं, पर नहीं, बहुत जगह there क्या है is कि a ये difference. बताऊं, Actually, I'm not recalling the definition. Let me see it. There is a difference between frontier points and boundary points. बाउंड्री It को is तो वो in लोग ऐसे यस मैम। it is in real, right? Real में आप बात कर रहे हो, real analysis में. मतलब इन जनरल नहीं होता क्या? By far, I haven't seen in topology. I don't know, but yeah, I have came across in real analysis. रियल एनालिसिस में भी है, बट इन जनरल भी तो बात कर सकते हैं ना। बाउंड्री हम्म। मतलब डेफिनेशन जनरलाइज की जा सकती है। हाँ। मैम मैम बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब कई जगह पर फ्रंटियर और बाउंड्री को सेम ले लेते हैं, कई जगह पर मतलब रिजल्ट से फिर प्रॉब्लम आती है। हाँ है तो frontier and boundary points in topological spaces and all. There is, it is. Okay, so if possible, then I'll see some definition or discuss it in next class. यस मैम, कुछ क्वेश्चंस भी ले आइएगा। ठीक है, ठीक है. Anything else? मैम See, कैन अबाउट कैंटर सेट, canter set और इसका क्या रिलेशन है? Like today's कनेक्टिवनेस, कनेक्टिवनेस ऑफ कैंटर सेट, canter set का what? What do you want to discuss about that? इज इट कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड? You can, okay. So canter set define कैसे होता है बताओ? हम बीच का वन थर्ड पार्ट निकाल देते हैं, तो हम्म. ठीक है. यूनियन ऑफ गुड इंटरवल्स। हम्म. यस तो is मैम। it connected? By definition, is it connected? मतलब दिख नहीं, कनेक्टेड तो नहीं दिख रहा, बट कैसे कहेंगे? आई गेस उसके ऊपर क्वेश्चन भी है, राइट? नहीं, उसके ऊपर यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन नहीं। मे बी इन द इंटरसेक्ट, अपकमिंग लेक्चर्स. लाइक आई होप। इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन जब आप लोगे तो यू विल गेट सिंगलटन, राइट? सिंगलटन। लाइक अगर आप उसका, ओके, सो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दैट. मतलब जो मैं कहना चाह रही थी कि अगर आपका इंटरसेट के जो कुछ और भी रिजल्ट्स है ना, यस मैम। सो उसको लेके कनेक्टेड को लेके एंड इट्स okay, we will see. I'll just go through it and then we will discuss about it. Okay. ऐसे Canter देख set. सकते हैं क्या मैम? वो जो डेफिनेशन थी उस टाइम पे आपने करवाई थी कि अगर दो ओपन सेट्स मिल जाएं ए एंड बी, सच दैट ई के कनेक्टेडनेस की बात करें अगर, Hmm. सच दैट कि ई में कंटेंट हो और बी में भी कंटेंट, Hmm. सॉरी यही तो था शायद। नहीं, ई इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी एंड ई इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, ई इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सॉरी, Hmm. एंड ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। Hmm. Hmm. तो अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो जो कैंटर सेट है वो किसी मतलब इंटरवल में तो शायद कंटेन नहीं हो सकता तो उससे वो प्रूफ हो कंप्लीटली, जाएगा ना कि वो डिसकनेक्टेड है. डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, वही बोल रहा हूँ कि वो हम्म. किसी उसमें इंटरवल में कोई ऐसे हमें मिलेंगे नहीं कि वो उसमें कंटेन हो जाए। हाँ, तो मतलब ऐसे भी आपको यू कैन सी इट, विजुअलाइज इट कि वो डिसकनेक्टेड है, और बाय दिस डेफिनेशन यू कैन प्रूव इट दैट इट इज डिसकनेक्टेड, राइट? और क्वेश्चन जैसे उसमें
हम ओरिजिन को निकाल देते हैं प्लेन से, हम्म। तब भी वो कनेक्टेड रह जाता है। तो इस तरह तो फिर कई जगह पर ऐसा हो जाता है ना कि कुछ पार्ट निकाल देते हैं, फिर भी वो कनेक्टेड रह जाता है। तो हम्म। इस तरह तो भी जो है थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि that हम ये will चाहें कि that will come in path connectedness na. यस मैम। So I hope that is in next like upcoming lectures, upcoming week, right? About path connectedness, then locally connectedness. मैम जैसे हम कोई डिस्क निकाल देते हैं सपोज प्लेन से, हम्म। वो कनेक्टेड रह जाएगा। जो R2 remaining R2 you are saying, है ना? R2 minus disk you are saying, right? Are you there? यस मैम। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि if this is your plane R2 and if this is disk D, okay? If you are removing this part, okay? So in upcoming lectures, you might have come across path connectedness, right? तो पाथ कनेक्टेडनेस में मतलब आप देखोगे कि कैसे रहेगा अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में दो पॉइंट्स पी एंड क्यू यू कैन ड्रॉ अ हाँ पाथ ठीक राइट. है। हम्म। सो इट फॉर्म्स पाथ कनेक्टेडनेस एंड उसी से जनरलाइज रिजल्ट हम कनेक्टेडनेस पे भी देख पाते हैं राइट कि व्हेन वी कैन से दैट. एवरी पाथ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। हाँ, every path वहाँ connected says no, नॉट बी। every path connected set is not connected, every connected set is path connected. यस मैम, तो अगर ये पाथ कनेक्टेड नहीं होगा तो वो कनेक्टेड नहीं। हाँ, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंडर हम बोल सकते हैं कि वो कनेक्टेड होंगे. यस मतलब उसमें कुछ थ्योरम्स कुछ कंडीशंस है, ठीक है. यस मैम, ठीक है. ये पाथ की पाथ है ये, मतलब हर जगह पर ये पाथ को हम कैसे ड्रॉ कर पाते हैं हर टोपोलॉजी में? लाइक मतलब प्लेन वगैरह में है, यूक्लिडियन टोपोलॉजी में तो ठीक है, मतलब कर्व, स्पेस, उसमें प्लेन, ये हम देख पाते हैं मतलब। हाँ, और जहाँ टोपोलॉजी में हम ऐसे मतलब ये तो कनेक्टनेस एक्चुअली की इट बात इज बात। डिफाइंड ऑन दिस ना 0,1. हाँ जी। यस हाँ, मैम। तो एक बार डेफिनेशन देखो और विथ रिस्पेक्ट टू दैट डेफिनेशन वी कैन डिफाइन इट इन ऑल लाइक ऑल टोपोलॉजीज. मैम ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन आपने उसको भी नहीं करवाए, क्या. होम्योमॉर्फिज्म से रिलेटेड हम्म. कनेक्टेडनेस, ओके, ठीक है, ठीक है. उससे कुछ भी नहीं करवाए। ओके, ओके. नेक्स्ट ठीक लेक्चर है. में प्लीज। ओके, ओके, ओके. I'll see with homeomorphism and connectedness. Then, what else you said? ओपन रहेगा तो कनेक्टेड मैप होगा कि नहीं, दैट थिंग राइट. एंड और क्लोज आ। ओके, ठीक है. तो आई विल ट्राई टू कवर दिस थिंग्स. ओके. बाय फार इज इट क्लियर राइट फॉर दिस लेक्चर. ओके. सो shall we conclude it?